Good morning, students. After studying dielectric and its polarization, we will now proceed to our next topic, that is capacitor and capacitance. The very first thing is that capacitor is completely a new concept for you. The word capacitor or capacitance comes from word capacity. So capacitor, it is a device which is used to store charge. Because in electrostatics generally we store charge on a conductor, so whatever be the arrangement there, that device is known as, or the object is known as capacitor, because it is storing the charge. So anything who stores the charge is treated as capacitor. Now capacitance, this is the capacity of a conductor to store charge. एक कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, this term is known as capacitance. Now it is just like उस कैपेसिटर पर चार्ज हो या ना हो, it doesn't matter. So capacity do not depend on number of charge. आप ऐसे ही कह सकते हैं एक क्लासरूम की जो कैपेसिटी है वो 40 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की है. अब उसमें कोई भी स्टूडेंट हो या ना हो, चाहे 1 स्टूडेंट हो या 10 स्टूडेंट हो, उसकी जो कैपेसिटी है वो 40 की ही रहेगी. सिमिलरली एक कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. उस पर चार्ज हो या ना हो, उसकी कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज. For a capacitor we use symbol C to represent its capacitance and its unit is farad. आगे देखेंगे इसका फार्मूला, और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी जो यूनिट है दैट इज कूलाम पर वोल्ट और कूलाम स्क्वायर पर जूल. ओके, नाउ ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे पढ़ रखा है दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन ए कंडक्टर V, it depends on the number of charge. So when a conductor is given some charge, its electric potential increases. अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बिकॉज चार्ज को स्टोर करने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जितना आप वर्क करेंगे वही पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होगा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज. सो सपोज ए चार्ज Q is supplied to a conductor. Charge Q is supplied to a conductor, and because of this supply, potential raises by value V. So this charge and potential, they are directly proportional. चार्ज हमने इंक्रीज किया, स्टोर किया, पोटेंशियल रेज हुआ V वैल्यू से. सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. Proportionality sign हटाए, then you will find a constant C. Q is equal to C into V. So we can write expression for C as Q upon V. Here C is called capacitance of capacitor and it is completely independent of Q और V. मैंने आपको बताया था कि capacitance charge पर depend नहीं करेगा. It is just the capacity, whether there is a single charge or group of charge, it doesn't matter, or the charge on the conductor is to its full capacity, it doesn't matter. Charge increase होगा, potential भी increase होगा, but this ratio remains constant. So capacitance never depends on charge or V potential. Okay, then on what factor does it depends? C depends on size, shape and separation of conductors. कंडक्टर्स को जब आप लेते हैं तो दो कंडक्टर्स के बीच कितना सेपरेशन है, क्या साइज है, क्या शेप है, दिस इज कॉल्ड, on these factors capacitance of a capacitor depends. Second thing, C depends on dielectric medium present between two conductors. दो कंडक्टर हैं, उनके बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है ये उस पर भी डिपेंड करेगा. नाउ we are going to study a topic which is not mentioned in our syllabus. Actually
whenever we talk about capacitor, capacitor is arrangement of two conductors placed at some distance. ये हम later on study करेंगे. That for forming a capacitor, we generally need two conductors. Then why cannot we use a single conductor as capacitor? तो इसको हम derivation के बाद में ही explain कर पाएंगे that if we use a single conductor as a capacitor, then it has a very small capacity to store charge. So let us first consider capacity of an isolated spherical capacitor. It must be noted that this topic is not in your syllabus and this topic will not be asked in the board examination. It is just for learning purpose. That if I have a single conductor, then why cannot I use it as a capacitor? So I am taking a spherical body of radius r as capacitor. Suppose charge q is supplied on it. So charge on conductor q, radius of conductor is r. What is the expression for potential V on its surface? Potential V is 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r. Now if it is potential, then what is capacitance of a spherical capacitor? C is equal to q upon V. Q as it is, substitute the value of V, q upon 4 pi epsilon 0 r. Q to q cancel, transfer this in numerator. So you will get 4 pi epsilon 0 r. So capacitance of single spherical capacitor or conductor, it is 4 pi epsilon 0 r. It means capacitance is directly proportional to its radius. आप जितना बड़ा साइज का रेडियस का आप कंडक्टर लेंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. नाउ लेट अस कंसीडर कैपेसिटी ऑफ अर्थ. हम एक अर्थ की कैपेसिटी निकालते हैं whose radius is 6400 kilometer. So if radius is 6400 kilometer, it can be written as 6.4 into 10 to the power 6 meter. Value of 1 upon 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 to the power 9. So 4 pi epsilon 0 is equal to 1 upon 9 into 10 to the power 9. Substitute these values. So 1 upon 9 into 10 to the power 9, radius 6.4 into 10 to the power 6. So capacitor C is equal to 0.711 into 10 to the power minus 3. Values can be rewritten as 711 into 10 to the power minus 6. It means minus 6 means micro. So capacitance is 711 microfarad. Microfarad is a very small capacitance. So you can see कि अगर आप कोई अर्थ साइज का भी कंडक्टर लेते हैं, ए सिंगल कंडक्टर हैव ए वेरी लिमिटेड कैपेसिटी. आप एक अर्थ के साइज का कंडक्टर लेंगे तो उसकी भी चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज ओनली 711 माइक्रोफैरड. Hence, single conductor is not used as a capacitor. Okay, तो अब आपको पता लगेगा कि हम सिंगल कंडक्टर को एज ए कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते. Then how will we form a capacitor? A capacitor is a system of two conductors separated by an insulating medium. दो कंडक्टर लेंगे, डिफरेंट सेम साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज, बट दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस और उनके बीच में मीडियम कैसा है, इंसुलेटिंग मीडियम है. एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बट इन स्मॉल स्पेस. प्रीवियस वन में जो हमने लिया था कि हमने एक सिंगल कंडक्टर यूज किया था, तो लार्ज अमाउंट चार्ज स्टोर करने के लिए हमें एक लार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट है. बट हियर वी विल यूज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए वेरी स्मॉल स्पेस. दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर. Okay, so what is the principle behind capacitor? The capacitance of an insulated conductor is considerably increased by bringing near an uncharged conductor connected to the earth. अगर हम एक सिंगल कंडक्टर के पास में एक दूसरा कंडक्टर प्लेस करें which is uncharged and connected to the earth, तो इस अरेंजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल प्लेस पर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर. रीजन क्या है, सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी तो कांस्टेंट है और वेरी लो है. सो हाउ कैन वी स्टोर
maximum charge, or we can increase the capacity of a charge. It can be increased by placing an uncharged conductor near the first conductor and connect the another conductor to the earth. Okay, now let us understand this principle by example. So this is the explanation of principle. This is conductor plate A. It is fitted on an insulated stand and some charge Q is given to it. तो ऑलरेडी बताया आपको इसकी कैपेसिटी फिक्स है, तो ये कैपेसिटी तक चार्ज स्टोर करेगा और उस समय पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. सो A is an insulated metal plate. Some charge is given to it till its potential becomes maximum. Hence no further charge can be given to it. जो इसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज स्टोर कर लेगा और जब चार्ज मैक्सिमम होगा उस समय पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा. उसके बाद आप एडिशनल चार्ज इसको सप्लाई नहीं कर सकते. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फिनोमेना अब हम क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग अनदर चार्ज नियर इट. सो फर्स्ट प्लेट इज एज इट इज, दिस इज द सेकंड और अनदर कंडक्टर बी. नाउ जब आप अनदर कंडक्टर बी प्लेस करेंगे तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पोलरिटी ये जो न्यूट्रल मेटल है इट गेट पोलराइज्ड. प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करता है, सो इट विल अट्रैक्ट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू दिस साइड. और जब सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड अकोमुलेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ड्यू टू रिपल्शन positive charge will reside on outer surface. So now another insulated plate B is held near A. Due to induction, negative charge get produced in inner side and positive charge get produced on outer face of conductor. Okay, अब आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर मैं इस A एंड B इसको एक कैपेसिटर यूज करूं, A के कारण जो पोटेंशियल था दैट इज सेम, बट व्हाट अबाउट दिस नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, सो इट टेंड्स टू डिक्रीज पोटेंशियल, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज it tends to increase its potential. So there is no remarkable change in potential of this system. Okay, when the potential is approximately same, so charge will remain moreover same. Then what we have to do in third case, according to definition, we have to earth the second conductor. Second conductor को हमें earth करना है. Earth, it is at neutral, so because of repulsion positive charge will not stick to the metal surface, it will move to earth because it is free to move to earth. हाँ, जो negative charge हैं they are bound with the force of attraction due to plate A, so they cannot go to earth, but positive charge will move to earth. So when plate B is earth, induced positive charge flows to earth. Now due to negative charge on B, potential of system is greatly reduced. पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा. सो व्हाट इज द ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस? सो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली हमें पता है पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चार्ज. नाउ a large amount of charge can be supplied to A to raise the potential level to maximum value. अब आप अगर उसको उसी लेवल तक रेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेट A को एडिशनल चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई होगा पोटेंशियल लेवल विल राइज, एंड व्हेन पोटेंशियल लेवल get reached to its initial value, the charge becomes maximum. So in this way we can store a large amount of charge on plate A without changing its dimension. So this is the principle of a capacitor. Okay, let us see क्या लिखा था हमने.
The capacitance of an insulated conductor is considerably increased by bringing near it an uncharged conductor and connected to earth. तो हमने पहले B को प्लेस किया और फिर उसको अर्थ से कनेक्ट किया. So this is all about principle of capacitor. Next, see the topic which is most important in this section. और आप मान के चले गारंटेड इस पोर्शन से हर साल बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर पूछा जाता है. तो ये जो कैपेसिटर सेक्शन है इसको आप एक सेपरेटली प्रिपेयर करें. ओके, नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Already we have studied that in a capacitor we use two conductors. Now, if these two conductors are in the form of plane surfaces, अगर दोनों कंडक्टर्स की जो शेप है वो प्लेन सरफेसेस की फॉर्म में है and they are placed parallel, then it is called parallel plate capacitor. Okay, so there will be two conductors in the form of a plane and they are held parallel to each other, so it is called parallel plate capacitor. So this is the symbol for parallel plate capacitor. If its value is fixed and if it is a variable capacitor, then it is used using this sign. Now we are going to find expression for parallel plate capacitor. So this is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. So just like principle, this is conductor A, this is conductor B, B is earth, plus charge and minus charge. The area of each plate is A and relative separation is D, and the medium here is vacuum. Now we have already been solved that electric field in this region and electric field in this region, it will be 0, but electric field between two plates, it will be sigma upon epsilon 0. A exercise was given to you to find out electric field in all three regions. Okay, so consider two parallel plates of area A held together at a distance D. So when Q charge is supplied to first plate, minus Q charge get induced on second plate. Okay, and positive Q charge induced on second plate goes to earth according to principle. Now electric field on left and right side of capacitor will be 0 as mentioned. And what is electric field between two plates? It is E sigma upon epsilon 0, where sigma is surface charge density. Okay, now if V is potential difference between plates, then V is equal to E into D. ये फॉर्मूला किससे लिया है? आपने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज चेंज इन पोटेंशियल अपॉन सेपरेशन. Using that formula you can find potential difference is equal to electric field into separation. Electric field and potential का relation देखें, electric field is equal to minus of change in potential upon change in distance or separation. Use that formula, so potential difference is equal to electric field and relative separation. Substitute value of E from this expression, sigma upon epsilon 0, separation D is as it is. What is sigma? It is charge per unit area, so it is Q upon A, D upon epsilon. This is the expression for potential. If potential is known, find out capacitance. Capacitance is equal to charge upon potential. So C is equal to Q as it is, potential QD upon A epsilon, Q to Q cancel, so you will get capacitance as epsilon 0 A upon D. So from this formula you can see that C depends on area of plates. It is directly proportional to area of plates. Plates का area जितना large होगा, large amount of charge will store on it. Separation between two plates. The capacitance is inversely proportional to separation between two plates. If two plates are held very close, capacitance will increase. If separation is increased, then capacitance will decrease. And the medium between plates.
दोनों के बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, whether it is vacuum or any other medium. Okay. Now suppose gap between plates, बीच का जो space है, it is filled with a medium of permittivity epsilon. What will be capacitance? Then C in the presence of any medium. Replace epsilon with epsilon 0 with epsilon. जो मीडियम लेंगे वही परमिटिविटी यहाँ यूज होगी, सो एप्सिलॉन A अपॉन D. दिस इज द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम. नाउ डिवाइड देम. Capacitance in the presence of medium and capacitance in the presence of vacuum. Divide them. Epsilon upon epsilon 0. And already we know that this ratio is known as dielectric constant or relative permittivity. So we can say capacitance in the presence of any medium, it is K times capacitance in vacuum or free space. So hence in the presence of a dielectric medium, capacitance becomes K times the capacitance in free space. इसका मतलब ये हुआ मीडियम की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है. अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करेंगे तो उस केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. नाउ फॉर वैक्यूम एंड एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1. This is the topic which we have already been studied. So it is just to remind you, epsilon upon epsilon 0, this is called relative permittivity or dielectric constant. We have studied it in the chapter 1. Okay, so this is all for today. Have a good day.